Hello viewers, in today's class we are going to discuss another problem from integral inequalities. So in this class we have to prove this important inequality in which we have this integral 1 to e log of x over x dx is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1 minus 1 over e. So to prove these kind of integral inequalities, we make use of one important concept from integral inequalities in which we have m times b minus a is less than or equal to the integral a to b f of x dx, and this is less than or equal to capital M b minus a, right? So if we have a function f of x which is continuous in the interval a comma b, and if m is the global minimum and capital M is the global maximum of this function f of x in the closed interval a comma b, then we have this inequality, right? So small m times b minus a is less than or equal to the integral a to b fx dx less than or equal to capital M times b minus a, where small m is the global minimum and the capital M is the global maximum of this function f of x. So let us write I is equal to the integral 1 to e is the exponential number, and here we have log x over x dx, and here we are considering the natural log of x, that is to the base e, right? So if we compare this integral with this one, that is a to b f of x dx, then the value of a is 1, the value of b is e, and our function f of x is log x over x, right? And it is quite clear that this function f of x is continuous in the interval 1 comma e, right? So let us investigate this function f of x for this m and this m, right? It means we have to find the global minimum, that is the absolute minimum of this function and the absolute maximum of this function in the interval a comma b, which is 1 comma e. So let us differentiate f of x with respect to x. So f prime of x is equal to x times the derivative of log of x, which is 1 over x, minus log of x, and derivative of x is 1, divided by x square. So here we have used the quotient rule for differentiation, that is v times du over dx minus u times dv over dx over v square, right? So this is now x and x get cancelled, so we have 1 minus log x over x square. Now see this interval. So here we have 1 and e, and the value of approximate value of e is 2.71, right? So the value of x is greater than 1, right? So here when x is greater than 1, then log of x is also greater than 0. So now consider this term, that is 1 minus log x, right? So 1 minus log x is always greater than 0 whenever x belongs to this interval, that is 1 comma e, right? And in the denominator we have x square, so x square is also greater than 0 for all x belonging to this interval 1 comma e. So this entire term, that is 1 minus log x over x square,
is always greater than 0 or this term is always positive for this interval 1 comma e. So we can conclude that the derivative f prime of x is always greater than 0 for all x belonging to the interval 1 comma e. So this suggests that our function f of x is an increasing function, right? So here we have established that this function f of x log x over x is an increasing function in the interval 1 comma e, right? So for x is equal to 1, for x is equal to 1, we'll get the value of global minimum, right? And for value of e, we'll get the value of global maximum, that is capital M. So the global minimum is now small m, which can be obtained by taking x is equal to 1 in the function. So f of 1 is equal to log of 1 over 1, and log of 1 is 0. So we have 0 over 1, that is equal to 0, right? And the global maximum can be obtained by taking x is equal to e in this function. So we have f of e, that is equal to log of e over e, and log of e is 1, that is 1 over e, right? So the value of m is now equal to 0, and the value of capital M is equal to 1 over e. So now using this inequality, we can now write m is 0. So we have 0 times b minus a. b is e and a is 1. So we have e minus 1. Then we have less than or equal to the integral 1 to e log x over x dx, that is less than or equal to capital M is 1 over e. And here we have b minus a, b is e, so we have e minus 1. So this quantity is 0, and this is our integral I, and here we have 1 minus 1 over e, right? So this is our desired inequality, right? So viewers, this is how, by making use of this inequality, we can prove these kind of integral inequalities. And always remember that whenever we have to use this inequality, we have to find the value of global minimum, that is small m, and the global maximum, that is capital M, using the function, right? So we have to investigate the function, whether the function is increasing or decreasing. Hello viewers, in today's class we are going to discuss another important problem from integral inequalities. So in this class we are once again going to prove one very nice integral inequality. Here we have pi over 24 less than or equal to the integral of sine x from pi by 6 to pi by 4 less than or equal to pi times square root of 2 divided by 24, right? So here we will show that the value of this integral, it lies between these two numbers, right? And provided we don't have to evaluate this integral, right? So without evaluating this integral, we have to establish this inequality, right? So let us start. So viewers, to prove this inequality, we'll make use of one important result from definite integrals, right? And the result, it goes like this. We have already discussed that result in our earlier videos. So here we are simply stating the result or the inequality which is to be used to establish this inequality, right? So if we have a function, say y is equal to f of x, which is a continuous function in the interval
a comma b, right? And if this function has m, that is small m, as the global minimum, right? So f of x has m as the absolute minimum value in this interval and capital M as the global maximum, right, or absolute maximum. So if this function f of x has small m as global minimum and capital M as global maximum, then this inequality holds, that is the integral a to b f of x dx is greater than or equal to m times b minus a, and this is less than capital M times b minus a, right? So this inequality shall be used to establish this one. So let us take this integral as I, right? So I is from pi by 6 to pi by 4 sine x dx. And if we compare this integral with this one, then we have here a to b f of x dx, and the lower limit is a. Here it is pi by 6, so a is pi by 6, upper limit is pi by 4, so b is pi by 4, and the function f of x is equal to sine x, right? And we know that this trigonometric function sine x is continuous, in the interval pi by 6 to pi by 4, right? So this function is obviously continuous and differentiable in the interval pi by 6 to pi by 4. So now let us investigate this function, right? That is f of x is equal to sine x. So now let us differentiate this function f of x is equal to sine x. So we'll get f prime of x is equal to cos x, because the derivative of sine x is cosine x. Now we can see that for all values of x belonging to this interval, that is from pi by 6 to pi by 4, cos x is always a positive quantity, right? So moreover, we can also say that pi by 6 to pi by 4, it lies in the first quadrant, right? So cosine of x is a positive quantity for all values of x, so our derivative must be positive, or in other words we can say that the derivative should be greater than 0, right? So when the derivative is greater than 0, this suggests that our function f of x is an increasing function. So whenever the derivative is positive, then the function is said to be an increasing function in the given interval. So now this function is increasing function. So x is equal to pi by 6, that is the lower limit. It gives us the value of m, right? And the value of x, that is equal to pi by 4, that is the upper limit. The upper limit will give us the absolute maximum, and the lower limit will give us the absolute minimum, right? So x is equal to pi by 6, will substitute it here. So the global minimum, that is small m, is given by f of pi by 6, and the global maximum or the absolute maximum is given by f of pi by 4. So f of pi by 6 is equal to sine of pi by 6, and sine pi by 6 is sine 30 degrees, that is equal to half, and f of pi by 4 is sine pi by 4, that is equal to sine 45 degrees, which is 1 over square root of 2. So once we have the values of small m and capital M, we can substitute all these values in this inequality.
right? So taking this inequality, we have m is half and b minus a is pi by 4 minus pi by 6, and here we have less than or equal to sign, and then we have the integral pi by 6 to pi by 4, and here we have sine x dx, and this is less than or equal to, here we have capital M, which is 1 over square root of 2, and b minus a, b is pi by 4, and here we have pi by 6. So now the difference pi by 4 minus pi by 6 is given by, here we have LCM 12, this is 4 3s are, this is 6 2s are, so we have pi over 12. So here we have half, this is pi over 12, and this integral we have denoted by I, and here we have 1 over square root of 2, and this is pi over 12, right? So now we have pi over 24, this is 2 12s are 24, here we have I, and here we have pi over 12 times square root of 2, right? So now we have obtained this important inequality. Now rationalizing the numerator and denominator by square root of 2, we can easily get pi over 24. Here we have I, and here we have pi times square root of 2, and here we have 12 root 2 times square root of 2. So this is pi over 24 I, and here we have pi root 2 divided by, this is square root of 2 times square root of 2 is 2, so this is 12 2s are 24, and this is our desired inequality. हेलो व्यूवर्स, तो आज की क्लास में हम इंटीग्रल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है, हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। यहाँ पर हमारे पास है पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 24 is less than or equal to this integral from pi by 6 to pi by 4 cos x dx, and this is less than or equal to पाई रूट 3 over 24। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक डेफिनेट इंटीग्रल से एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो कि डिफाइंड है इस इंटरवल में a कॉमा b में, राइट? और एफ ऑफ एक्स जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन का जो एब्सोल्यूट मिनिमम है, अगर हम उसे m से डिनोट करें, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट? और इसका जो एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, उसे अगर हम कैपिटल M से डिनोट करें, तो हमें जो इनइक्वालिटी मिलेगी वो ये मिलेगी, m टाइम्स b माइनस a इज लेस देन और इक्वल टू द इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स b माइनस a। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्मॉल m है ये एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, जिसे हम ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं, और जो कैपिटल M होगा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम होगा। लेकिन M और M जो हमें फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के लिए, वो इस इंटरवल में होंगे, राइट? a कॉमा b में। तो हमें अपने को जो रिस्ट्रिक्ट करना है यहाँ पर, वो a से b तक हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल m और कैपिटल M। तो चलिए अब इस इनइक्वालिटी पर आते हैं। तो ये जो इंटीग्रल हमें यहाँ दिया हुआ है, इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I है पाई बाई 6 से पाई बाई 4 तक, और cos x dx हमें दिया हुआ है। तो इस इंटीग्रल को हम कंपेयर करते हैं इस इंटीग्रल के साथ, राइट? तो देखिए a टू b है, f ऑफ x है, dx। तो a जो है लोअर लिमिट है, तो इसकी वैल्यू पाई बाई 6 होगी,
और b जो है वो अपर लिमिट है, π/4 हो जाएगा, राइट। तो जो इंटरवल हमें यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा π/6 से π/4 तक। तो π/6 जो है हमारा 30 डिग्रीज है, π/4 हमारा 45 डिग्रीज है, राइट। और इस इंटरवल, ये जो इंटरवल हमारे पास है, ये हमारे पास जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर कॉस एक्स। तो चलिए इस फंक्शन के लिए हम जो एब्सोल्यूट मिनिमम है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, यानी कि स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स वो मिलेगा माइनस साइन एक्स, राइट। तो अब देखिए ये जो एक्स है यहाँ पर, ये एक्स जो होगा वो इस इंटरवल में होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, राइट। लेकिन यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ तो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्मॉल एम और कैपिटल एम को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होता है तो जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इंटरवल है वो है π/6 और π/4, राइट। तो जो ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स का वो डिक्रीज करेगा, यानी कि π/6 से π/4 तक। तो इसका मतलब ये है कि π/6 जो होगा वो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम देगा, राइट। और π/4 जो है वो हमें एब्सोल्यूट मिनिमम देगा। तो कैपिटल एम को फाइंड आउट करने के लिए हम x इज इक्वल टू π/6 का यूज करेंगे। तो कैपिटल एम हो जाएगा f ऑफ π/6, राइट। तो f π/6 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो cos ऑफ π/6 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा cos 30 डिग्रीज, और cos 30 डिग्रीज की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। और स्मॉल एम यानी कि जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा इस इंटरवल में वो हमें मिलेगा π/4 पर। तो f ऑफ π/4 जो होगा वो हमें मिल जाएगा cos π/4। तो cos 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी, राइट। तो चलिए b माइनस ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b माइनस ए हमें मिल जाएगा π/4 माइनस π/6। तो एलसीएम ले लेते हैं 4 और 6 का, 12। तो यहाँ आ जाएगा 3π, यहाँ आ जाएगा 2π, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/12, राइट। तो चलिए अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उसे हम इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। और b माइनस ए हो जाएगा 5 ओवर 12, और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये जो इंटीग्रल है वो हमारा ये इंटीग्रल आ जाएगा π/6 से π/4 तक, और cos x dx आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू हम रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और b माइनस ए आ जाएगा हमारे पास π/12, राइट। तो इस इंटीग्रल को हमने I लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास π/12 √2। तो √2 से हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा I, और यहाँ पर हमारे पास है π√3 ओवर 24, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ हमें मिल जाएगा π√2, और यहाँ पर √2 टाइम्स √2 जो होगा वो 2 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, राइट। तो देखिए हमें जो इनइक्वालिटी यहाँ पर प्रूफ करनी थी वो हमारे पास ये इनइक्वालिटी यहाँ पर हमें मिल गई है।
सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम यहाँ पर जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और इस इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी का यूज़ करके इस तरीके की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें हम प्रूव कर सकते हैं।